What? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अनोखा प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान 2047। उस वक्त पाकिस्तान विल आल्सो बी 100 years old। जिस तरीके से भारत 100 साल का हो जाएगा, पाकिस्तान भी वैसे ही 100 साल का हो जाएगा। हम सब बोलते हैं विकसित भारत, भारत तब तक एक ताकतवर देश होगा, एक उभरता हुआ देश होगा। आज ही मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा जहां वो बोलते हैं कि और कुछ हो या ना हो, 2050 तक भारत एक सुपर पावर बनेगा। 2049 तक चाइना का उम्मीद है कि वो भी एक सुपर पावर बन जाए और वो भी एक विकसित देश बन जाए, फुल्ली मॉडर्न डेवलप्ड कंट्री, जिस तरीके से शी जिनपिंग का ख्वाब है। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान का क्या ख्वाब है, पाकिस्तान का क्या हालत होगा 2047 तक? आखिर वो हमारा पड़ोसी है। तो एंड दैट विल डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इंडिया। अगर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 25 साल में पाकिस्तान में क्या होगा, क्या वो रहे ना रहे, फिर उसका असर हमारे ऊपर होगा। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान बिल्कुल सुधर जाए, वो भी एक सुपर पावर बन जाए, पर क्या उसका अंदेशा है या नहीं है, या फिर सिर्फ एक ख्वाब है? ये सब देखने के लिए मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम करो, पाकिस्तान का क्या हालत होगा, क्योंकि इसके आधार पर मेरा अगला प्रोग्राम होगा कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को हम वापस कैसे लेना है। वो जरूरी है लेना है, पर उसका तरीका क्या है और किस टाइम फ्रेम में होगा, किस काल में होगा, वो एक आइडिया, अंदाजा मिलेगा जब हम ये पाकिस्तान 2047 तक उसका आकार क्या होगा, when we understand what Pakistan 2047 is. Right. I could have made a assessment of Pakistan 2047 through any other thing, but I have used only Pakistani sources. पाकिस्तान के अंदर से जो कवर आ रहा है, उनका डेटा, उनके मीडिया से निकाला हुआ, उनके लिखाई जो भी है, जिसने भी लिखा है, उससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया और आपको मैं प्रदर्शन करूंगा, ये प्रेजेंट करूंगा, ताकि ये ना हो कि एक भारतीय जनरल ने पाकिस्तान 2047 के बारे में अंदाजा लगाया, तुक लगाया, ये प्रोपेगेंडा है। इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तानी लोग जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ एनालिसिस लास्ट में मेरा होगा, पर 90% ये है पाकिस्तानी का बात होगा। ये एक वेबसाइट है पाकिस्तानी, पाकिस्तान 2047 फेलोशिप आउट किया है, री इमेजिन पाकिस्तान करके, ड्रीम पाकिस्तान 2047। इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान क्या होगा 2047 के अंदर, और इसके लिए लोगों को बुला रहे हैं कि भाई बोलो पाकिस्तान का क्या हाल होना चाहिए। खैर, इसी सिलसिला में एक विजन 2047 भी है पाकिस्तान के अंदर, और उस विजन 2047 के अंदर की एनेबलर्स क्या है। पीस और सिक्योरिटी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, डेवलपमेंट चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज चाहिए, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। राइट। उसके बाद इनमें चाहिए कमिटमेंट एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो वो कहां से आएगा वो बात, और सोशल जस्टिस की भी जरूरत है
कि क्या ये 5 चीज जो अभी है ही नहीं बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर, क्या ये अगले 25 साल में आ सकता है? ये सोच की बात है या सिर्फ ये ख्वाब की बात है? राइट। फिर इस साल जो नया गवर्नमेंट वहां स्थापित हुआ है, उसका फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि पाकिस्तान के अंदर ये क्षमता है कि आजकल उनका जो जीडीपी है, जो $300 बिलियन है, 2047 तक वो 3 ट्रिलियन हो जाएगा। फ्रॉम 300 बिलियन जीडीपी, there they feel they have a potential to go up to $3 trillion. That's a huge jump. That's a 10 times increase. That means every year it has to be, from the next 25 years, like, uh, Pakistan has to grow at nearly 25% every year, 20 to 25%. In the minimum, if you forget even $3 trillion, even to go up to 2 or 3 trillion, two, I mean, I would say from 300 billion to go up to 1 trillion, that is triple your GDP in the next 25 years is a big ask. But then वो बोल रहे हैं तो हमें मानना ही पड़ेगा। और वो भी जब लोग अपना पैसा पाकिस्तान में रहने रखते हैं, पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में जो भी कमाता है, किस तरीके से कमाता है वो अलग बात है। वो जाकर दुबई में लगाते हैं और ये दुबई लीक्स का ये है, जहाँ 12.5 बिलियन एक इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट जो अभी तक निकला आया है, उसका बाद कितना है और कितना वैल्यूएशन है इसका किसी को नहीं पता। क्या ये रुक सकता है? क्योंकि अगर ये नहीं रुकेगा, तो आपका जीडीपी 10 गुना कैसे होगा? ये भी तो सोचने वाली बात है, राइट? तो अगर आप एक तरीके से अगर आप पाकिस्तान का जो आकार हम यू नो एग्जामिन करेंगे, तो द कॉमन पीपल आर 99% इन पाकिस्तान, 1% are elites. Out of that, the army is 1%. That's the broad thing. And this 99% and 1%, ये मेरा सोच नहीं है, ये सोच है मिफ्ता इस्माइल का, जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका बारे में उनका जो राय है आगे बताऊंगा आपको मैं। पर जहां तक आबादी छोड़िए, जहां तक पावर, वेल्थ एंड प्रिविलेजेस आर कंसर्न, द आर्मी, द स्मॉल आर्मी कंट्रोल्स 90% ऑफ पावर, वेल्थ एंड प्रिविलेजेस इन पाकिस्तान. 9% of it is controlled by the elites, and it is only 1% which goes to 99% of the people of Pakistan. That's why Miftah Ismail calls it the 1% republic. इसका एडिटोरियल है 1% रिपब्लिक। उन्हीं का आंकड़े मैंने लिया कि पाकिस्तान में 99% जो है वो काम करते हैं और 1% खुश रहते हैं। इसी सिलसिले में एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये जो 1% और 9% है, ये एक अलग, मतलब ये जो 1%, ये एक अलग पाकिस्तान है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में दो पाकिस्तान है। एक वो एलिट्स और आर्मी का पाकिस्तान है और एक आम जनता का पाकिस्तान है। इन दोनों में कोई मेल नहीं है। जो ये जो 1% है, द टॉप 1% ऑफ पाकिस्तान, वो एक अलग पाकिस्तान खुद के लिए रचा दिया और वहां रहते हैं। और बाकी जो 99% पाकिस्तानी जिस तरीके से जूझ रहे हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं। इसका there is going to be severe repercussions of this as you go down the line. Okay, now
The repercussions are already being seen. That's the point I'm trying to make in this slide. The repercussions are the army is still 90%, elites 9%. The 1% of the common people are generally deprived, exploited, and underprivileged. As a result, over the past 75 years, centrifugal forces have developed. And these centrifugal forces are in Baluchistan, Pashtun areas, Khyber Pakhtunkhwa, and Kashmir. When I say Kashmir, it includes Gilgit Baltistan and Pak occupied Kashmir opposite the Jammu sector, Jammu Rajौरी sector. So these three parts of Pakistan are under a centrifugal force, बाहर जा रही है. जब तक यहाँ का आबादी को आप ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं देख सकते हो, इनको एक्सप्लॉइट करना बंद नहीं करोगे, and they till they don't feel deprived, this problem will continue. In fact, as you go along, this problem will increase because just next to them on one side, they're seeing India, which is prospering. And I'll talk about India a little later because all these go into seeing what Pakistan in 2047 will be. And based on what Pakistan 2047 is going to be by 2047, you get the broad trajectory of Pakistan. And then you calibrate your actions. You calibrate your actions against not only against Pakistan, you also calibrate your actions against China. Because what you do to China, Pakistan, the repercussions will be there in China. The repercussions will be there in the broader Indian Ocean. You forget the fact that they are a nuclear nation. We'll talk of that also a little later. Okay, at this point of time, आज के दिन, Pakistan is one of the hunger hotspots of the world. खाने के लिए इनके पास अनाज नहीं है और ये इट्स नॉट माय ख्वाब नहीं है, ये एक इंटरनेशनल एएफपी का रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हो. ओके, सो इट्स नॉट द हाईएस्ट ऑफ कंसर्न्स, बट इट इज वेरी हाई. It's just not simply high, it's very high. And you're talking 250 million people in a very high state of hunger. Average life expectancy of Pakistan is just about 67 years, which is less than India and Bangladesh. जो बांग्लादेश एक टाइम में पाकिस्तान का हिस्सा था, वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63 73 इयर्स का है और अभी यहाँ पाकिस्तान में इट्स गॉन डाउन टू 67 years. So that's also a major problem with Pakistan. But more importantly, climate change, growing population, low agricultural needs, they all have contributed to this insecurity, food insecurity and undernourishment. Now, in Pakistan, the agriculture sector is 18.9% of the GDP, and the workforce employed is 42.3%. Half the population lives in rural areas, and it is directly dependent on agriculture. Pakistan is amongst the largest producers of wheat, cotton, sugarcane, rice, mangoes, dates and quinoa. फिर भी इस देश के अंदर फूड इनसिक्योरिटी है. 4 साल पहले तक या 5 साल पहले तक ये खाना एक्सपोर्ट करते थे, फूड. अभी ये नेट इंपोर्टर है फूड का, और दिन बर दिन ये फूड इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं. राइट? अगर आप ये देखोगे और अगर इनका आबादी देखेंगे, तो
जमीन तो उतना ही है, उससे ज्यादा आपको उत्पादन नहीं होगा खाद्य सामग्री का। अगर उत्पादन नहीं होगा तो लोग ज्यादा होंगे तो क्या होगा? आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट के लिए आपके पास साधन नहीं है, ना आपके पास कोई फार्म लॉज है, ना आपके पास फार्मिंग रिफॉर्म्स हैं। इट्स अ फैक्ट। So you'll see this going day by day down. Look at this population. आज 225 million है. By 2047, the population will be 354 million. That is 1.5 times. Today, आज के दिन 225 मिलियन के साथ ये खाना इंपोर्ट कर रहे हैं। जब ये 354 मिलियन हो जाएगा इनका पॉपुलेशन, तो कितना खाना इंपोर्ट करना पड़ेगा? इनका बेरोजगारी कितना होगा? क्योंकि ऑलरेडी 50% लोग ये रूरल एरिया में रहते हैं और एग्रीकल्चर में हैं। जमीन तो उतना ही है, पानी उतना ही है, लोग उतना ही काम कर सकते हैं जमीन के ऊपर। तो ये जो 100 या 125 मिलियन लोग जो आएंगे, इनके लिए काम कहाँ है? काम काज कहाँ है? जीरो। आज तक हमने देखा नहीं। पर आगे जाके इन्हीं का, ये सब डेटा इन्हीं का है। वाटर अवेलेबिलिटी देखिए, पानी। हम बोलते हैं अगर इतने लोग हैं, इनका आबादी है, इनको पानी चाहिए। ऑलरेडी ये सीमित है, ये डेटा इसके अंदर, पर ये डेटा देखिए तब पता चलेगा आपको। ये डेटा सीमित है 2025 तक, यानी अगले साल तक। ऑलरेडी ये रेड लाइन देखिएगा, ये ऑलरेडी एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी लाइन में आ गया। इसमें देखिए ये जो रेड ऑरेंज लाइन है, वो जो नीचे आ रहा है, वो है वाटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। ब्लू लाइन है इनका आबादी जो ऊपर बढ़ रहा है। ये पड़े हुए तीन लाइनें, एक ग्रे है, एक येलो है और नीचे एक ब्लू है। ये ग्रे जो है वो वाटर स्ट्रेस लाइन, और वाटर स्ट्रेस लाइन को इन्होंने पार कर दिया 1980 में। वाटर स्कैर्सिटी लाइन है जो ऑरेंज लाइन है, उसको इन्होंने पार कर दिया 2010 के करीब। अब 2025 को आ रहा है, एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी है। इनके पास मतलब पानी बिल्कुल नहीं है, और ये 2025 तक है। अगर आप एक्सट्रापोलेट करोगे अगले 25 साल के लिए, तो इनके पानी का किल्लत होगा पाकिस्तान के अंदर। लोगों को ये इस जो पानी इनके पास उपलब्ध है उसके साथ क्या लोगों को हेल्प करेंगे? लोग पानी लोगों को भी पानी चाहिए, या वो इंडस्ट्री में लगाएंगे, या पावर सेक्टर में लगाएंगे, या एग्रीकल्चर में लगाएंगे। और तो और इनके जो पानी का साधन है वो भी कम होते जा रहा है, क्योंकि इनका एक ही नदी है, इंडस रिवर। उसके दो डैम है, तारबेला और एक और याद नहीं आ रहा है, वो आ जाएगा दिमाग में, बता दूंगा मैं। जो हमारा नौशहरा सेक्टर के सामने है, एक और बन रहा है ऊपर, दैमर बाशा। वो अभी बन रहा है, अगले 10 साल में पता नहीं क्या बनेगा नहीं बनेगा। अगर वो बन भी गया तो अंदाजा ये है कि इन्हीं का अंदाजा है कि उससे इनका पानी का शॉर्टेज जो आज उपलब्ध है पानी, वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये जो दो डैम हैं इनके, जो लेक्स हैं, राइट, रावी के ऊपर और चनाब के ऊपर, उसमें ऑलरेडी मिट्टी जम गया है, उसमें पानी रोकने का क्षमता कम हो गया है। तो जो भी दैमर भाषा में पानी उपलब्ध होगा, वो जो अभी खोया जा रहा है उसको मेकअप करेंगे। यानी कि पानी रिक्वायर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर will not increase. In fact, it will decrease with increase of population. So Pakistan is faced with increase of population, decrease of water, and the same amount of land which is available. And we'll talk of climate change a little later. Right. They also have some goals.
ये जो पाकिस्तान ड्रीम एंड ऑल दैट, आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस गोल्स. I found it very interesting. Population growth as of now is 2.4%. They feel that by 2047 they'll get it down to 1.2%. How will it do happen? Because this is a country with, if you start today to get it down to 1.2%, it's like something like China. China has 1.112%, and that after 25 years of one child policy, in which they actually put people behind bars for having the second child. Okay, public expenditure on education as of now is 2%. Health is less than 1%. They want to double it. पैसा कहाँ से आएगा इनके पास? Tax revenues are 13% of GDP. They want to take it to 20%. वैसे पाकिस्तान में कोई टैक्स देता ही नहीं है, तो आप जा सकते हो, ठीक है ना? You can keep going down the line on all these things, right? And you'll see all these, ये कागजी है, ये सब गोल्स, ये एक गोल भी ये हासिल नहीं होगा. हम तो कम से कम बोल रहे हैं आज हमारा 4 इकोनॉमी है, अगले 2 साल या 4 साल में 5 ट्रिलियन हो जाएगा. और उसके बाद हमारा अंदेशा है कि तो 2030 तक डबल हो जाएगा. 2030 तक हमारा डबल हो जाएगा. फिर देखेंगे कहाँ जाएगा हमारा. तो आज हमारा जो जीडीपी है इनसे 6 गुना दूर ज्यादा है. इसके बावजूद हम ये नहीं ख्वाब देख रहे हैं कि हमारा $30 ट्रिलियन हो जाएगा 2047 तक. ये ख्वाब है, और ये पूरे डेटा जो है अभी तक ख्वाब. मैं ख्वाब दिखा रहा हूं आपको, पाकिस्तान का ख्वाब. वो है ना पिक्चर, सुनेरी लाल का हसीन सपने, जो भी मुंगेरी लाल का हसीन सपने. ये पाकिस्तान में कोई मुंगेरी लाल होगा तो उसी का हसीन सपने मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट. एक देखिए इसने लिखा है, एक है शहजाद वहीद, पाकिस्तान से ही आया, लिंडियंस एंड देयर विशफुल थिंकिंग. भैया मेरे को तो विश नहीं चाहिए, आप विश कर लो. आपका क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा कालिए, या तुम्हारा क्या होगा पाकिए, हमें यही हम उसका अंदाजा लगा रहे हैं. ठीक, आपको एक आईना दिखा रहे हैं हम, आपसे कोई हमें ये नहीं है, आपको सिर्फ एक आईना दिखा रहे हैं आपका क्या हालत है और क्या हालत होने वाला है. चलो, और ये पूरा जैसे मैंने बोला, मैंने लिखा नहीं, ये खुद पाकिस्तानियों को लिखा है, ने लिखा है. पाक इंडिया रिलेशंस, इसका आकार क्या होगा 2047 तक. कहता देयर बी polarized इंडो पाक रिलेशंस, and polarization has started on 5th August 2019. रोड, ट्रेन एंड एयर ट्रैवल, नॉर्मल ट्रेड एंड कमर्शियल ट्राइज हैव सस्पेंडेड. वो आज का दिन है. ये क्या वापस आएंगे नहीं आएंगे, इनको कोई अंदेशा नहीं. इनका ये कहना है कि भाई अगर आएंगे तो भारत ने पहल करना है, हमें तो कोई लेना देना नहीं इनके. यही, और ये खुद लिखते हैं, इंडिया डजंट केयर इफ रिलेशंस विद पाकिस्तान कैन नॉट बी नॉर्मलाइज्ड. और फिर Pakistan needs normalized and peaceful relations with India because of its worsening economic and political situation. But still, they want India to go back on its commitment or scrapping Article 370 to resume talks and normalcy. इसका मतलब उनको चाहिए normalcy, बट पहल हमने करना है. ओके, ये भी बोलते हैं यही इनका ना मुंगेरी लाल का हसीन सपना है. ये इंडिया विल बी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028. इनका एक्चुअली इट्स होने वाला है. बाय 2047 इट विल बी अ स्ट्रांग इकोनॉमी. इंप्रूविंग रिलेशंस विद पाकिस्तान इज नॉट रिक्वायर्ड. दे से India does not need to improve its relations with Pakistan.
And they also say India could be in Security Council by then, by 2047. And today, in Financial Times, it has come out. I think Martin Wolf, or someone who's written, he's very clearly said India might not be the most developed nation, but its GDP will be at par with USA and China, comparable, and it'll be a superpower because of its sheer, uh, you know, population and other strengths which it will gather. There's a forward momentum. So far, जो भी हमने मुआयना किया है पाकिस्तान के बारे में, यहाँ एक rearward momentum है. That's important. Okay, the next thing is lack of leadership. देखिए, कुछ भी बोलो, आप राइट विंग को हो, लेफ्ट विंग को हो, जो विंग को हो, कुछ भी बोलो, हमारा जो लीडरशिप है फ्रॉम द टाइम ऑफ नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह एंड वाजपेयी जी एंड मोदी जी, और लीडरशिप हैज इंश्योर्ड, बाकी हो या ना हो, भारत आगे बढ़ता गया है, विकास होता हुआ आ रहा है. हमारे यहाँ कंपटीशन ये है पॉलिटिकल सर्कल्स में. हमारा प्रधानमंत्री ने भी बोला है पार्लियामेंट के अंदर, हमने ये किया है, आपने क्या किया है, और उन्होंने आंकड़े दिखाए कि आपने कुछ नहीं किया. और बहस उसके ऊपर होता है कि हमने क्या किया. वहां तक आने का नौबत ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर. ये एक साउथ कोरिया को लेके कंपेयर कर रहे हैं. ये एक, इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग. इसे साउथ कोरिया अचीव्ड astounding economic growth from its GDP per capita from $146 in 1963 to today it has got per capita GDP of 29,700. Why? It is due to transformative and visionary leadership. The key difference, this is all Pakistanis what they say. The key difference between South Korea's success and Pakistani's stagnation was lack of socio-economic vision and visionary leadership to make it into a self-sustaining, modern, competitive, prosperous nation. Pakistan development plans have remained mere plans, lacking an inspirational force. तो अब तक जो नहीं हुआ, अगले 25 साल में कैसे होगा? And Pakistan had a transformational opportunity with the China-Pakistan economic corridor. ये इन्होंने गवा दिया already. CPC, as per them, was relegated to contracting procurement bonanza of collection of power and transportation projects. वही वो 1% जो रिपब्लिक है ना, इन्होंने पैसा लूट लिया CPC से भी. Leaders have failed to catalyze Pakistan's economic transformation through business-to-business cooperation, development of special economic zones, and joint ventures with Chinese partners to enhance local export competitors. They've lost it. आजकल तो CPC तो रुका है और ये डेट ट्रैप में है, सबको पता है. उसके भी बारे में बात करेंगे. So लीडरशिप है ही नहीं, और जब तक ये आसिम मुनीर और उसके गैंग ऊपर होंगे, कोई ये नहीं है. ये जो पिछले 8 साल से इनका एक हाइब्रिड सरकारी चलता आ रहा है. उससे पहले कोई सरकारी नहीं था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ बॉस था. 8-10 साल से जो सरकार पाकिस्तान आर्मी का हुक्म नहीं माना, उसको निकाला गया है. तो इनका, और पाकिस्तान आर्मी के पास कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान को विकसित बनाने के लिए. उनका प्लान है पाकिस्तान आर्मी को खुश करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उनका खुद का पैसा बनाने के लिए, और वो दुबई में जाके पैसा लगाने के लिए इनका बड़ा प्लान है. भारत के साथ लड़ाई करने के लिए इनका बड़ा प्लान है. पर एक आम पाकिस्तानी को गैस पहुंचाना या खाना पहुंचाने का इनका कोई प्लान नहीं है, लीडरशिप नहीं. और क्या, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे, और खास करके आप जो पाकिस्तानी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई लीडरशिप ऐसा है जो ये सब उल्टा करेगा? मेरे को नजर नहीं आ रहा है.
At 75 years, ये डॉन का है. At 75 years, Pakistan is viewed as the sick man of South Asia. Can it heal over the next 25 years? ये इनका खुद का हेडलाइन है. ये हेडलाइन को मैंने लगा के आपको दिखा दिया. मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा हूँ, कुछ नहीं. Without enriching the many and not just the few, Pakistan can never be an inclusive, innovative, and independent country. Individuals speaking the truth are found behind bars. ये ऐसा देश है. Every military intervention has worsened the security outlook for citizens. लोगों का individual security नहीं है पाकिस्तान के अंदर. Lack of human security is in a society forces individuals to seek security for themselves. अगर ये जितने फौज है या पुलिस है या सिस्टम है, it cannot secure the individual. The individual will take steps to secure himself, and that is what is happening in Pakistan. That is why you see radicalism, you see groups forming up, and all that. Now people are forming themselves to securitize themselves, and that is why you see the centrifugal forces in Balochistan, KPK, and Kashmir. क्या ये रिवर्स होगा? नहीं होगा. अगर ये बढ़ता जाएगा तो एक दिन पाकिस्तान टूटने का इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब टूटे. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले. इनसिक्योरिटी जब तक है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा. और जब तक ये हालत इनसिक्योरिटी है ही नहीं, तो Pakistan's economy will struggle to bring in foreign expertise and talent critical to modernizing its economy and generating sustainable growth. तो ग्रोथ होगा नहीं. तो ये जो 10 बिलियन ये $10 ट्रिलियन हम बना लेंगे या $3 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमी हो जाएगा अगले 10 साल के अंदर, ये सब ख्वाब है ये. ठीक. ओके. दूसरी बात, जमीन. इतने लोग आ जाएंगे, जमीन उतना ही है. और बात यह है कि जो जमीन इनके पास है वो भी उस 1% के पास है, सबके पास नहीं है. राइट. देखिए, और ये खुद लिखते हैं, इंडिया अंडर नेहरू मैनेज टू पुश थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एट स्केल व्हाइल पाकिस्तान्स लीडर्स फेल्ड. लीडरशिप चाहिए आपको लैंड रिफॉर्म करने के लिए. और ये कंपैरिजन उन्होंने जब हमारा जो लैंड रिफॉर्म लॉस आए थे, फार्म लॉस, उस वक्त भी इन्होंने ये बात हुआ कि भाई इंडिया कैन टॉक ऑफ फार्म लॉस बिकॉज इट हैज डन लैंड रिफॉर्म्स. इन्होंने कुछ नहीं किया तो फार्म लॉस तो रिफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है हमें. लैंड दैट बिलोंग टू सिटीजंस फॉर जनरेशंस वाज फोर्सबली टेकन अवे इन कोल्यूशन विद द गवर्नमेंट टू डेवलप हाउसिंग सोसाइटीज. क्योंकि आजकल हाउसिंग सोसाइटीज का चाल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर. तो अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हो तो लोगों के पास क्या बचा है? कुछ नहीं है. और ये सिलसिला क्या वापस होगा? नहीं होगा. तो जिनका एक ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो हाउसिंग सोसाइटीज है. An economy where property is not secure struggles to attract investment in capital intensive sectors, especially from foreign sources. बाहर से कौन पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाएगा? चाइना वाले ने लगा दिया, उसने अपना उंगली he's burnt his fingers. और पैसा नहीं लगाएगा. अगर पैसा लगाएगा तो वहां का पैसा वापस लेने के लिए वो तैयार है. उससे आप पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा. पाकिस्तान अपना जमीन गिरवी रख लिया ऑलरेडी. राइट. अगर सिक्योरिटी नहीं है तो कोई निवेश नहीं होगा. कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं तो कोई निवेश नहीं करेगा. ओके. तो लेस प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर रॉब्ड of their wealth, leading to the development of an exclusionary economic system where upward social mobility remains attainable for broad swathes of society. ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये खुद बोल रहे हैं कि कोई गरीब आके वहां अमीर नहीं बन सकता. कोई चाय वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, जो चमत्कार इंडिया में हुआ है. आप नरेंद्र मोदी जी को कुछ भी बोलिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमारे प्रधानमंत्री हैं. एक जमाने में वो चाय बेच रहे थे, उनका पिताजी का चाय का दुकान था और चाय बेचते थे, चाय मदद करते थे, जो भी है.
ऐसे एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया है इस देश का। क्या ये चमत्कार पाकिस्तान में हो सकता है? अगर आप इनके पूरे प्राइम मिनिस्टर्स देखिए, तो या वो फौजी रहा है, यानी जो शासन में, या ये 4-5 गिने-चुने फैमिलीज़ से हैं, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास लोग ज़्यादा हो गए हैं, आपके पास उगाने के लिए ये नहीं है, सिक्योरिटी है ही नहीं, तो कहाँ जा रहे हो आप? रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज आर गवर्न्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप हेल्ड टुगेदर बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही चलता है। Pakistan fares poorly in this regard with individuals and businesses alike, frequently violating contracts and getting away with it without punishment. तो उस हालत में कौन सा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर चल सकता है? It is common for the sovereign to not pay its liabilities on time, which is why there is the energy and commodity circular debt in the country. खुद बोल रहे हैं ये कि सर्कुलर डेट है पाकिस्तान के अंदर, और ये कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, ये बढ़ता जाएगा। Increasing the security for life, property, and contracts in Pakistan is the only way to get out of the various distortions we see in the country's economy today. How can they do it? Rule of law is required for a country to progress, and that rule of law is not there. So, if the rule of law is not there, security is not there, there's no water, there's no energy, there's no land, there's no agriculture, there's food insecurity, and everything put together, water insecurity, how will Pakistan grow? In fact, what you see is is the slide of Pakistan and proving that Pakistan will keep sliding down the chute. That's the point. Okay. Then you look at security and violence. It's there, someone or the other. I have not given you the quotes, but if you Google these words, you will get the article. These are all genuine. It's not my thinking. Birthed in the tumult of partition, Pakistan has been plagued with violence of all kinds since its founding. We know it. Brutal murders after blasphemy allegations shows how normalized violence has become with everyday life in Pakistan. In the past 3 to 4 years, more and more people are being killed on the name of blasphemy. So there's radicalization is of two, three varieties in Pakistan. One is blasphemy related radicalization. One is the jihadi radicalization. And the third, I wouldn't say radicalization, militancy and lack of law is because of what the security forces do to their own people. इनका एक प्रॉब्लम है मिसिंग पीपल बलूचिस्तान में। लोग उठाए जाते हैं, उसके बाद कबर ही नहीं होता। किसी को ये नहीं पता, वो लाश तक नहीं मिलता है इनका। और वही कहानी वहां भी चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में। So security and violence जब हो, when nothing is sanctified, your life and your property are not sanctified, how will Pakistani grow? So the same thing, he says Pakistani's economy would struggle to bring in foreign expertise and talent critical to modernizing its economy. So there's no question. Security of property is closely linked to the security of life. A society where the owner of property remains insecure will have a tough time protecting an owner's property. Yeah, I'm giving you the whole lot of insecurities which Pakistan is going through, and there's no leadership to reverse it. There's no movement in Pakistan to reverse it. ख्वाब है, सुनहरे ख्वाब है कि इनका पोटेंशियल है $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। नजम सेठी का व्यू है ये 2011 का है, 13 साल पहले की व्यू है।
उस वक्त का पाकिस्तान अब मैं पढ़ूंगा और आज का पाकिस्तान में फर्क क्या है 13 साल के बाद देखते हैं. Pakistan inherited 5 provinces and a few princely states. India started with 9 provinces and scores of princely states. He's comparing India and Pakistan. India absorbed the states within constitutional framework and went on to create 28 linguistic provinces to give effect to maximum local culture and economy autonomy. Pakistan went in the opposite direction. It compelled princely states to swear allegiance to a non-constitutional center. So he himself says that the Pakistani center is non-constitutional and then created two units out of five, ending up with the exploitation and repression of the bigger of the two units, Bengal. The consequence was disintegration of the country in 1971 and the rise of a dangerous subnationalism and separatism in what remains of Pakistan. Today, India has a vibrant strategic relationship with America that benefits it enormously, while we have a transactional one that hurts us badly. Mind you, he's written this in 2011, 13 years back. We have moved on from that. Has things India has changed. India has come about leaps and bounds ahead. Pakistan has gone back. So what you see the fourth line which is spoken of very important. The country has once disintegrated. Then there are subnationalisms and separatisms. They will run their course. When they run their course, you will see another set of separatism. And that the cause of separatism and subnationalism is now increasing by the day in Balochistan, uh, Khyber Pakhtunkhwa, and in Kashmir. कश्मीर अभी शुरू हुआ है. आपने देखा 3 महीने पहले कितना वहां हंगामा हो गया. So slowly you see a history repeating itself in Pakistan. That is the thing, right? Okay. And over and above that, you see it has gone already 25 times to the IMF. Now, IMF, World Bank, everyone says Pakistan's economy is increasingly fragile. Default risks at the highest. Public debt, whatever it is, we all know, right? The Your income is 12.5% of the GDP and expenditure is 20%. So there's a current account deficit always. And it is going up and up. It's almost 20, almost, 7.7% plus, which means it's over 70% current account deficit. So your economy is of, as of now, this is latest, this in a basket everyone knows, in the debt trap. So पैसा है नहीं आपके पास. The country is in a debt trap where it must borrow more to pay back its existing debt. It is thus only natural for annual debt payments also spike. ये तो बढ़ता जाएगा. For example, the authorities had anticipated debt servicing to jump to 7.3 trillion rupees, or almost 58% of the budgeted expenditure for the current fiscal. ये एक हफ्ते पहले की बात है ये. However, according to a report, they have to now revise these estimates to 8.3 trillion rupees. That is 1 trillion, 16% increase in their actual things. And this will, ये तो बढ़ता जाएगा. Already it is 58% of your budgeted expenditure. तो आप जितना भी कमा रहे हो उसमें 58% आप उधारी के लिए दे रहे हो, 48% आप देश के लिए खर्च कर रहे हो. उसमें फौज ने जो लेना है ले लिया, बाकी बचा हुआ क्या है, कुछ नहीं है आपके पास, टेंगा. इसीलिए 99% है वो और 1% रिपब्लिक की बात हो रही है. ओके. इनका जो सोशल, ये देखिए, नियोनाटैलिटी रेट इज सेकंड ओनली टू दैट ऑफ लेसोथो. ठीक. The neonatal mortality rate in Balochistan will be highest in the world.
यानी कि बच्चा पैदा कर होते ही माँ का मर जाना। दैट्स नियोनेटल मोर्टेलिटी। 28 million children are out of school, which is the highest number in the world, and 40% of the children suffer from stunted mental and physical growth. So इससे क्या है, इनका मेडिकल खर्चा भी बढ़ जाएगा। देखिए ये सब एक्चुअल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा है। मैंने सिर्फ इसको इंटीग्रेट किया है और आपको एक पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ मैं। ओके, ये इनका जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स, एक आर्टिकल है जिसमें बोल रहे हैं कि सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैव प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर मिलिट्री डिक्टेटर्स थ्रू आउट देयर हिस्ट्री। देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी तब इस्तेमाल करते हैं जुडिशरी के थ्रू, जब मिलिट्री टेक ओवर करना है। हर वक्त ये सेम पेज में रहते हैं, पर किताब अलग होते हैं। पन्ना एक ही होता है पर किताब अलग होता है। So he says they talk of misalliance between weak and civil and powerful military persists and continuously weakens the state. There's a culture of entitlement at the expense of the state by both civil and military elites. This is Miftah Ismail's article. He says ritualization of religion and the Islamization of the army has become ingrained in the system. It has bolstered Islamization of the education and history. तो आपका एजुकेशन भी नहीं बढ़ रहा है। The centrifugal forces seem to be edging out the centripetal forces that have held Pakistan together for the next 75 years. Pakistan shouldn't be called the Islamic Republic, but rather the 1% Republic. Last line is important. Opportunities, power, and wealth here are limited to the top 1% of the people. The rest are not provided with opportunities to succeed. ये है 1% रिपब्लिक है ये। यही इनका खुद का एक फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है। ओके, राइट। फिर पाकिस्तान आर्मी के बारे में कैसे हम जिक्र नहीं कर सकते। ये भी लिखते हैं, देयर इज अ लॉट दैट इज रॉन्ग अबाउट द पाकिस्तान आर्मी। इट इंटरफियर्स इन पॉलिटिक्स टू मच, इट मेक्स बैड foreign policy choices, it blocks peace feelers with India, it accounts for too much of the GDP. It is too deeply entrenched in the economy. Its human rights record is mixed. However, it is now the main institution holding the Pakistan together. पर कब तक पाकिस्तान आर्मी विल होल्ड पीपल टुगेदर? जैसे जैसे इनका आर्थिक हालत बिगड़ता जाएगा, पाकिस्तान आर्मी का पकड़ कम होता जाएगा। और ऑलरेडी इसका actual on ground, it is there already in KPK and Baluchistan. They are going to undertake this Azme-Istifkam. We're going to talk about this day after tomorrow with General Hasnain. This is the fourth time they're doing some kind of a Zarbe Momin and Azme-Istifkam, whatever it is, along the Afghanistan border. This is the fourth time. This time it doesn't appear they'll come out of it. If they don't come out of it there and their economy keeps going down and they're doing it at the best of China, and Kashmir has shown already certain signs of dissipation, जो पहले कभी नहीं था। तो पाकिस्तान आर्मी मेरे ख्याल में अगले 5-10 साल के अंदर, 5-10 साल अंदाजन बता रहा हूँ, उसका पाकिस्तान के ऊपर पकड़ के ऊपर ढीला हो जाएगा और फिर पाकिस्तान टूटना शुरू होगा। एक बड़ा चांस है ये। क्या ये हो सकता है? हो सकता है। क्या होगा? आई डोंट नो। आई डोंट नो। फ्यूचर में क्या होगा? ये थोड़ा हमने अंदाजा लगाया है।
भाई 2047 बिलावल भुट्टो जो है ना वो तब तक 58 इयर्स का हो जाएगा। हो सकता है वो या और कोई, मेरे को नजर नहीं आ रहा, वो लीडर होगा पाकिस्तान का। तब तक population would have expanded to 328 million, an accretion of 100 million compressed in the same landmass. Education, housing, employment opportunities, retirement obligations, even digging sufficient graveyards are predictable imperatives. ये सबको पता है कि इतने लोग हो गए हैं तो इनको शमशान इतने चाहिए, शमशान घाट दफनाने के लिए, वो उनको होगा ही नहीं। Water resources are not finite but diminishing. ये देखिए वो खुद बोल रहे हैं कि खत्म होने वाला है। Water tables are dropping. Climate change has taken water management out of our hands. Provincial bickering over water usage will continue into 2047. By 2014, the Chinese presence in Pakistan will go beyond CPEC and military self-sufficiency. It will spread into our agri-economy with mass production techniques designed to keep Chinese chopsticks clicking. What will be the state of Pakistan by 2047? Will it remain Pakistan like this? Will it remain a Pakistan which is under the Chinese rule? Or will Pakistan break Kashmir और KPK और वगैरह टूट जाएंगे, और सिर्फ पंजाब और सिंध रहेगा, और वो पंजाब और सिंध भी वो अंडर चाइना हो सकता है। तो इसके 4-5 ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ऑप्शंस किस में क्या होगा, पर एनी ऑप्शन कैन हैपन बिकॉज पाकिस्तान इज लूजिंग कंट्रोल ऑफ itself day by day. Every day it's losing control of itself. Okay. There's another interesting article. Pakistan's population in 1993 was 125 million. 1993 में उस वक्त का एक पाकिस्तान, 1993 का, अभी दो पाकिस्तान है, क्योंकि इनके 250 मिलियन है, उसी इलाके में दो पाकिस्तान हो गए। In 1993 the nature of crisis was fathomable. पता था कितना इनका प्रॉब्लम है। And it is said that dusty young Pakistan was still relatively young as a state, country, and an idea. It was reeling, but the quantum of change it faced was fathomable. Total external debt was 24 billion. Today it is 126 billion. आबादी डबल हो गया, डेट जो है 5 गुना हो गया। वही, so double the population but 5 times the external debt. By 2075 अगर पॉपुलेशन 2.75 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो ही अंदाजा है, सेम लैंड एंड रिसोर्सेस, बट 10 to 15 टाइम्स द एक्सटर्नल डेट होगा, अगर होगा तो, अगर पाकिस्तान बचेगा तो ये है पाकिस्तान का असलियत। आबादी, पानी, फूड इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, डेट, वायलेंस, पाकिस्तान आर्मी, जो भी है मैंने सबको बता दिया आपको। न्यूक्लियर, सब बोलते हैं न्यूक्लियर पावर। बाय 2047 वी विल बी अ न्यूक्लियर पावर विद डेंचर्स। ये क्यों बोल रहे हैं? न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर परमाणु हथियार को अपग्रेड करने की जरूरत है, उसको मेंटेन करने की जरूरत है। उनके पास पैसा है कहाँ है? अगर वो उसमें पैसा लगा दिया, इनके पास बिल्कुल नए परमाणु हथियार हैं, तो पाकिस्तान और जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा। देश में और किसी और चीज के लिए खर्च करने के लिए इनके पास पैसा नहीं होगा। हर हथियार जो है वो पुराना होता जाता है, उसका यूज खत्म हो जाता है। अगर उसको रिप्लेस करना है और लेके, वो अलग बात। ओके, वी विल लैक द रिसोर्सेज टू अपग्रेड आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ये खुद लिखते हैं। By 2047, when the world will be cloven into another Cold War divide, whose side will we be on? वो खुद बोल रहे हैं हम क्या करें?
uneven relation between the military and the civil leadership and the unequal resource allocation of budgetary resource will continue. So ये कहानी इसका 2047 तक वापस आने का अंदेशा नहीं है और बिगड़ने का पूरा चांस है. By 2047 ये कहते हैं कि world would have advanced exponentially. Major nations will be competing for international dominance. Majority of the natural resources will either be depleted or on the brink of depletion. Water security and energy scarcity will spark many global conflicts. ये fact है ये, दुनिया का है ये. Approximately 9 billion people will be walking the earth. Weapons will become more deadly and nuclearized. Warfare will become a frequent occurrence. ये सब. तो उस हालत में पाकिस्तान के पास क्या क्षमता है कि उसी तरीके से चलने का. आज का पाकिस्तान में बहुत बदलाव होगा. मेरा हिसाब से पाकिस्तान शायद ही बचे और उसके लिए हमें आज से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का एक हिस्सा हमारा है और वो है गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, और हमें वापस लेने का पूरा अधिकार है. क्यों? बाकियों के साथ तो आप कुछ कर सकते नहीं हो, क्योंकि वो कभी भारत में नहीं था, पर ये लेने का अधिकार है हमारा. आज तक हम उस इलाके के लिए जेएनके असेंबली में सीट भी हमने नियुक्त करके रखा है कि जब वापस आके हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो ये अगर पाकिस्तान का चाल चलन है और आगे का रास्ता है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये है मेरा सोच. राइट? What will Pakistan be? Will it be a democracy? Will it be a military assisted democracy? Will it be a dictatorship assisted by a weak democracy? Will it be a hybrid government? Will it be a backseat dictatorship? I don't know. It could be all of those. But the larger question I have is this: will Pakistan survive itself? Right? I know it's been a little long presentation, but I thought I must put across to all of you what will Pakistan be by 2047. Because my next few programs, one I'm doing with General Hasnain day after tomorrow, and the title is Killing Fields of Pakistan. We're going to discuss what's happening there, and also we'll discuss something about what's happening in Jammu and Kashmir and how do we take it forward. If the problem in Jammu and Kashmir doesn't go with a normal method, there are other methods which we have to start. We also know what's the trajectory of Pakistan, and I'll discuss that. It's time to retake Gilgit Baltistan and POK. Otherwise, there's no security here. लोग हर दूसरा दिन यू विल स्टार्ट हैविंग दिस. ये बेवकूफी है कि एलओसी के अंदर गोला मारो, ये मारो, वो मारो, वो सब वो मेरे ख्याल में उसका टाइम चला गया. हमारा जमीन है, हमारा देश है, वो हमारा सब कुछ इलाका हमारा है, हमें लेने की जरूरत है. विल सी. इसीलिए दिस इज अ प्रीकर्सर टू द नेक्स्ट 2-3 एपिसोड्स ऑफ माइन. I hope you have liked it. If you have liked it, please press the like button. And for those of you who are seeing it for the first time, subscribe to this channel because I'm going to do something different. बाकी सब करते रहेंगे, but I'll do something different. I'll take a few questions, right? Uh, yeah. Even after Pakistan breakup, what will India do about the Trans-Karakoram Tract with China? यही तो है का बात. Right? यही बात है that if you can take back JNK, you start negotiating with China because the agreement of secession, why Pakistan ceded that Trans-Karakoram tract to China, the agreement says that
when the final settlement of J&K takes place, the negotiations will reopen. So we'll start, we'll renegotiate it. But that you're talking too far ahead. Let's see how to take back our land. I hope you're understanding that. NRK. Sir, terror attacks in Gen K are rising not only in number but intensity and audacity. Is he trying to? This is a minor question in the context of what I'm talking. We will ask this question day after tomorrow. We'll talk of it with General Hasnain. Uh, yeah, sir, explain. Thanks a lot, Saurabh. I hope you enjoyed it. Okay, today India dominates spelling bee, chess, etc. This validates that Indians have brains. When and how will Indians become world champions in science and mathematics? It's a process. We're already there. Don't worry, it'll happen. There's no time limit for these things. I've seen this change over the past 25, 30 years, right? I've seen our cricket team becoming so powerful after a matter of 40, 50 years. It takes time. We should not be in a hurry. Okay, General Ravi Shankar, how do India and Pakistan uh, compare on the following? Look, just Arvind, just these figures are available on the net. You just have to go to per capita adjusted GDP, PPP, ये सब power consumption. You just put it and you'll get it. These are irrelevant things. Get to the major issue. These are facts. For these facts, go to other channels. I am not. I've given you the data which is uh, theirs. You've seen the data. I don't think you should have this. Yeah. Hmm. Okay. Will Pakistan ever be able to develop properly? I mean, given how radicalized they are, and the army being the supreme lord of all, can't ever see them being a manufacturing. Look, this is a. I've already said. I've not said that they'll develop. Have I said that? Sam, the point is very simple. Nothing is going to happen. I am only saying that Pakistan's trajectory is going down and it is irreversible. We have to be now proactive to see what we need to do about it. I'm not asking you to be saying you take a military action, आप LOC खोल दो fire कर दो, ये पूछो. No, the time is now from now to the next 25 years. You have to actually forecast. Look, I alone can't do it. This is my compilation. You have to actually forecast where Pakistan is going and what you have to do with it. Because it's going to be a neighbor. The 225 million people are your neighbor, and they're going to become 350. And there's going to be chaos. Social chaos has already started. You have seen centrifugal forces set in, and they're not going to return back. So, what do you do? You have to start changing your thinking. Okay, Shritik. My biggest worry is that the idiots will implode and it will eventually result in millions of jihad-minded folks heading towards our borders and being civilians. We can't. No, I don't think that will happen, and I don't think we'll allow that to happen. There will be a problem, but we'll push them back. I'm very clear. Okay. Yeah. Deletion of my comments is avoiding to face a possibility of Prithviraj. No, I don't think. Don't worry about all this, Jawaharlal. Don't talk of this. Don't go. Don't go to one extreme. Talk in the center. Talk logic. Okay, I have nothing against you. So he says you've got a lot of comments which is put Pakistan Zindabad. I also will say Pakistan Zindabad. Please continue to do what you're doing because you can't do anything more. It'll only keep going down. Don't worry. Excellent presentation. Please do a similar projection on China, Europe, Russia. Look, I can't do of the whole world. Okay. I am focusing on India's interests. Ramnath
Please understand, and everyone, I focus on India's interest. What is India's interest? India's interest is India, on which I talk, technology, GDP, military, I talk. I talk of Pakistan, which is our adversary. I talk of China, which is our adversary. I talk of the Indian Ocean. I talk of our neighbors. I talk of global geopolitics. For example, I'm sure on Friday, self and uh, Mr. Shreyar ji on P Gurus and Gunner Short, please come back on Friday. Friday, 9:30 at night, Indian Standard Time. I've already put a request to him. We'll talk about the latest trip of Mr. Modi to Russia, and we'll talk of the India-Russia the trip, the dynamics, and the effect on the globe. We'll talk of it. Come back. I'm interested in talking about us. How I bothered how USA goes or not goes. I will be bothered as much as it affects me. I'll do that analysis. But at the end of the day, I talk for India. I don't talk for a party. I talk for India. Understand that. Okay, I think, yeah. Okay, last question. Assuming Pakistan breakup, what India do about 63 Pakistan? Yeah, that's what I said. We'll have to start negotiating, right? So this is all what I had to say. I request all of you to tell your views on this. Put down your views. Send this video to your friends. Recommend your friends to see this video. Or join Gunner Shot. I request you people to those of you who are interested, please join as members, because if you join as members or you contribute in whichever way you can, because the money which I get out of it, I educate girls, those girls who can't otherwise afford education. Right. Tomorrow I'm going to talk of something very interesting. Same time, we'll talk of AI in battle, artificial intelligence in battle, and I'm going to talk of with someone who's into artificial intelligence. Okay, so that's all for the evening, or rather, evening for me and morning to those of you who are in India. Have a great day. Thank you. Good morning and Jai Hind. Yeah, thanks a lot, System Level Thinking, for joining as a member. I do hope more join in. Thank you.